कि दो छोर देश का दो हिस्सा है, और आज से वो वैज्ञानिक है, हमारे जाने माने देश की एक पहली फ्रंटलाइन संस्था जो कि विज्ञान संचार की क्षेत्र में अपनी योगदान रख रहा है और उनकी ही निगरानी में ये सब हो रहा है। उसके साथ वो जुड़े हुए हैं एज ए एडवाइजर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए मेंबर सेक्रेटरी गुजरात काउंसिल ऑफ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम गुजकॉस्ट के नाम पे जानते हैं। साथ में ही नरोत्तम सर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गुजरात साइंस सिटी गांधीनगर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के निमित्त में काम कर रहा है। अगर उनकी कामों के बारे में हम बताएं तो डॉक्टर नरोत्तम साहू सर is a scientist by profession and science educator by training. He has been recognized for his commitment to public engagement and for igniting a sense of wonder among the children and citizens by unveiling the interplanary between science, technology and society. डॉक्टर साहू सर जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, Dr. Sahoo sir is presently working as the advisor and member secretary of Gujarat Council of Science and Technology, जिसे कि देश भर में गुजकॉस्ट के नाम पे जाने जाते हैं, under the government of Gujarat. He was also the senior scientist at Gujarat Science City Gandhinagar, with which he has been associated since 2001 and now serving as an executive director on additional charge for Gujarat Science City. Dr. Sahoo sir had postdoctorate research at Homeo Bhabha Center for Science Education of Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai. He has completed his doctoral work in chemical sciences at the Regional Research Laboratory of CSIR in Bhubaneswar and was conferred with PhD degree by Utkal University in 1999. He has 45 publications to his credit, spread over national and international journals of reputed. Dr. Sahoo sir was conferred with Dr. B.C. Dev Award for Science Popularization in 2014 by the Indian Science Congress Association, ISCA. He got the recognition for the best personality in science and technology for 2015 from the Computer Society of India in association with Institute of Engineers India. The Indian National Science Academy, जिसको इंसा के तौर पे जाने जाते हैं, has conferred its prestigious Indira Gandhi Prize for Science Popularization for 2007. Recently, Dr. Sahoo sir has been honored with the Times Gujarat Icon 2020 by the Times Group. Dr. Sahoo sir is prolific, popular science writer, digital age communicator and IPR promoter. He believes in the practice of constant learning and applying new ideas and technology with an aim to achieve new standards of excellence. सर की जितनी भी बातें बताई जाए वो कम है। सर के बारे में जानने और सुनने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है लर्निंग प्रैक्टिस। सर खुद भी लर्नर है और हम जब उनकी बातें सुनते हैं तो तब भी मतलब लर्निंग का मजा दूसरे ही स्टेटस में आता है।
तो सर इस बार आपसे सुनना है, because this year has been declared by UN as a international year for of basic sciences and for sustainable development. तो इसी बारे में सर का व्याख्यान है। तो चलिए समय ना गवाते हुए सर के पास सीधे चलते हैं और इस बारे में सर की राय, सर की व्याख्यान और सर की जो किया है बारे में हम सर Yes, good evening to everybody, and thanks to Anjan sir and Anil sir of Indian Science Communication Forum. It's a great thing connecting everybody during this thing during the corona pandemic, and that's also giving us a lots of inspiration that how we have to continue on a regular basis though we are not physically available. हम लोग पहले फिजिकली अवेलेबल नहीं होने के कारण के भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल्दी से जल्दी इस तरीके से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम के लिए आज में श्री अंजन बनिक साहब एंड हमारा अनिल कुमार त्रिपाठी सर जो इसका मुख्य पुरोधा है, मुख्य कन्वीनर है इंडियन साइंस फोरम के लिए, मैं इनके लिए आभारी हूँ। एंड इनके हम लोग जैसे डिस्कशन किया हुआ था एंड जैसे सारा वर्ल्ड अभी ये साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस तरीके से सेलिब्रेट करें, इसके बारे में कुछ हम लोग बात करने के आग्रह रखेंगे। देखिए लगभग 2020 से 2022 आधा तक लगभग 2.5 साल हम लोग एक वेरी अननोन टाइम के अननोन जो स्पेस है, अननोन टाइम है, इस तरीके से एक कोविड-19 पेंडेमिक में हम लोग आए हैं जहाँ पे हम लोग को मालूम नहीं था कि हम लोगों को इस तरीके का सिचुएशन हमको फेस करना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट, एक मिनट पहले इसको देखो भी जाता है कि नहीं, ये नहीं जाएगा। Sir, I would like to excuse you. This laptop which I was using, it is going to be ruined. I'll just take some time, the 3-minute time to shift my laptop to desktop so that we can have some sort of continuity. एक दिग्गज हमारे साथ है बने हुए हैं और थोड़ी ही देर में वो आ जाएंगे। डॉक्टर नरोत्तम साहू सर जो कि एडवाइज़र और मेंबर सेक्रेटरी है हमारे गुजकॉस्ट गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं गुजरात साइंस सेंटर गांधीनगर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। सर एक पॉपुलर साइंस कम्युनिकेटर है एज ए, जैसे कि हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया कि सर एज ए प्रोफेशन साइंटिस्ट है, लेकिन वो बाय पैशन एक साइंस कम्युनिकेटर है। सर की बहुत सारी जो पीएचडी डिग्री है और केमिकल साइंस में उनकी जो रुचि है वो बहुत ही जाने माने हैं और बहुत सारे साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में के साथ भी सर जुड़े हुए हैं। हमारी जब IISF
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल या फिर नेशनल काउंसिल, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, इस तरह की जो भी प्रोग्राम नेशनल लेवल की होती है, उनकी मेज़बानी में भी कुछ कॉस्ट स्पेशली डॉक्टर नरोत्तम साहू सर की योगदान रहती है, उनकी सोच रहती है। और साइंस कम्युनिकेशन की क्षेत्र को और किस तरह से पॉपुलर किया जाए और उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, उस बारे में भी सर सोचते रहते हैं। और उनके गुजकोस्ट की ओर से देश भर के बच्चों को, टीचरों को, साइंस कम्युनिकेटरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की भी कोशिश होती रहती है। तो ये एक अनोखी चीज़ है जो कि हमें दिखने को मिलता है उनकी काम के बारे में। अगर हम सोचे तो ये सब उभर कर आती है उनके कामों से। डॉक्टर नरोत्तम साहू सर वो बहुत दिनों से न केवल गुजकॉस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, वो जबकि एक अनूठी बात है कि जब हमारे आज के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तब के टाइम पे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी उनके साथ जोड़ के डॉक्टर नरोत्तम साहू सर साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा योगदान उन्होंने रखा था। और आज की जो साइंस कम्युनिकेशन की इतनी बढ़ चढ़ कर हम बातें करते हैं, उसके साथ भी जो जुड़ाव है वो भी एक तरीके से उनकी ही देन है, उनकी ही दिशा मार्गदर्शन से आगे बढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे, उनकी बात सुनना चाहेंगे, क्योंकि 2022 इस पूरे साल को यूएन की ओर से इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तौर पे डिक्लेयर किया गया है कि देश की और दुनिया की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो सके, हमारी जो ईंधन है लेके हमारी जो जीवन है उस पूरा सस्टेनेबल हो सके, और उस पर हमारी जो बेसिक साइंस है उसका क्या प्रभाव है, और उस ये किस तरह से हमारी कामों को आगे ले जा सकते हैं, हमारे कामों को किस तरह से बेटर बना सकते हैं, हमारे लिविंग स्टाइल को किस तरह से अपलिफ्ट कर सकते हैं, इस बारे में ही सोचने के लिए इस साल को इस तरह की मान्यता दी गई है। और आज हम उन्हीं से इस बारे में सुनेंगे। डॉक्टर नरोत्तम साहू सर जो कि साइंटिस्ट है और एडवाइज़र और मेंबर सेक्रेटरी है गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजकॉस्ट के, और साथ में ही वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, एज ए साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं गुजरात साइंस सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ। कुछ तकनीकी वजह से वो हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और हमें अपनी व्याख्यान से कुछ नया सीखने का एक मार्गदर्शन देंगे। डॉक्टर नरोत्तम साहू सर। ये एक भारतीय विज्ञान संचारों का समूह है और एक ऐसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहां से सारे देश भर के विज्ञान संचारक अपनी योगदान रख सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। जिस मंच का आगाज किया कपे अनिल कुमार त्रिपाठी जी ने, इनकी अगुवाई ये पूरा मुहिम चल रहा है हर शाम 6 बजे विज्ञान के नाम, और हर शाम कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी ही सोच से हमें मुक्त करके हमें मंत्र मुक्त करते हुए जाते हैं। आज की इस शाम हमें जिन्हें सुनने का मौका मिल रहा है वो है डॉक्टर नरोत्तम साहू, साइंटिस्ट है, एडवाइज़र, मेंबर सेक्रेटरी है गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजकॉस्ट का, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है
गुजरात साइंस सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। थोड़ी ही देर में वो हमसे जुड़ेंगे और अपनी व्याख्यान से हमें मिलेंगे। डॉक्टर नरोत्तम साहू सर। भारतीय विज्ञान संचारों का समूह एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। हर शाम 6 बजे ये मंच सबके लिए जीवंत हो उठता है और ज्ञान ज्ञान विज्ञान की नई नई चीज़ों पर हमें सुनने का, जानने का मौका देता है। ये एक मुहिम है हमारे आदरणीय अनिल कुमार त्रिपाठी जी के अगुवाई में, जिसके साथ पूरे देश भर की बहुत सारी दिग्गज हस्तियां जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे साइंस एडुकेटर, सम्मानित व्यक्तियां इसके साथ जुड़े हुए हैं और अपनी ही ऊर्जा से सबको ऊर्जान्वित करने की काम करते हैं। एक एकेडमिक स्तर पे ये एक ऐसी मुहिम है जो कि देश भर को एक नया दिशा भी दिखा रहा है, एक नया मार्गदर्शन भी दे रहा है। आज हमारे साथ नए विज्ञान की बारे में हमसे बात करने के लिए जो जुड़े हुए हैं वो है डॉक्टर नरोत्तम साहू सर, जो कि साइंटिस्ट है, एडवाइज़र एंड मेंबर सेक्रेटरी गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजकॉस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गुजरात साइंस सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। सर आज जिस बारे में बात करेंगे वो है इस साल को जिस तरीके से हमें लेना चाहिए, यूएन से, राष्ट्र संघ से जिस तरीके से इस साल को मौका दिया गया है एक नई तरीके से, हमसे सर जुड़ चुके हैं। वेलकम सर। नहीं, कोई बात नहीं सर, चलिए। क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली देयर वाज ए टेक्निकल प्रॉब्लम, आई कीप ऑन वेटिंग, so sometimes technology help us and sometimes technology put us in also great trouble. सर वही तो हमें सीखना है सर, मुश्किल में कैसे जीना है सर, तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है सर। एक्चुअली वही मुश्किल से ऐसे 2 साल का जो हमारा शुरुआत हुआ, जो कामकाज हुआ कोरोना के टाइम में, आखा वर्ल्ड प्लैनेट अर्थ देख लिया कि कैसे तरीके से सारा लोग हम लोगों को इस तरीके का महामारी से हम लोग जीने का एक नया वे निकाला एंड इस तरीके से हम लोग सारा चीज को नॉट ओनली इंडिया हमारा आज एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम लोग इनको अच्छा तरीके से इनको रिजॉल्व किया। फिर भी हम लोगों का इतना कम टाइम में साइंस टेक्नोलॉजी के कारण में हम लोग को एक नया रास्ता दिखाया सारा विश्व को। तो इसी के कारण में जिस तरीके का टेक्नोलॉजी में हम लोगों का चल रहे हैं, जिस तरीके का टेक्नोलॉजी के अंदर में हम लोगों का वैसे चैलेंजिंग सिचुएशन को ले रहे हैं, तो इसी कारण से हम लोग
इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तरीके का शीर्षक यूनेस्को, इसी के लिए ही कोरोना टाइम का जो लर्निंग लेसन हम लोग लिया, इसी के कारण में पूरा अखा साल को एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा है। इसमें दो मुद्दा है, एक तो है हमको बेसिक साइंस को जो है, जो बुनियादी विज्ञान है, जो हमारा ज्ञान है, इसको हम लोगों को बढ़ावा देना है, इसमें हमको प्रमोट करना है, इसमें हम लोगों को आग्रह बढ़ाना है। एंड आने वाला जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे, लीडर्स होंगे, इनको भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सेंसिटाइज करना ही है। एंड इसके कारण के इनके साथ 2015 से जो शुरू हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन का 17 गोल रखा है, इसी को भी कैसा, ये भी हम लोग अभी 2022 के बीच में है एंड 2030 तक हमको हम लोग इनका लक्ष्य को पूरा करने का एक हमको डेडलाइन दिया गया है। तो ये दोनों को कैसे तरीके से जोड़ करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरफ से आगे बढ़ेंगे एंड बेसिक साइंस को भी प्रमोट करके हम लोग कोरोना जैसे महामारी भविष्य में सपोज आएगा, इसमें हम लोगों को कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, इसके कारण के लिए सारा विश्व यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल अनाउंसमेंट के कारण में हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज 17 तारीख हुआ, 18 तारीख हुआ, 8 तारीख में इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन सेशन यूनेस्को का द्वारा हुआ था एंड अभी दिस 8 जुलाई से 7 जुलाई 2023 तक ये सेलिब्रेशन जारी रहेगा। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। I have a small presentation and मैं इसको भी शेयर करता हूँ एंड मुझे लगे कि हम लोग साथ में, बिकॉज ये जैसे है कि हमारा भारतीय विज्ञान संचारक का के समूह है, इंडियन साइंस कम्युनिकेटर्स का ग्रुप है, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी साहब का ये एक बड़ा उद्यम है जहाँ पे ये प्रोग्राम हर कंटिन्यूअस तरीके से ये चालू है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इनके आगे बढ़ा पाएंगे। माय स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन दिखाई देते हैं? सर शेयर करिए सर। स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, नहीं आया अब तक। ओके, आ रहा है सर, आ रहा है सर स्क्रीन। ओके, सो 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस, जो बुनियादी साइंस के लिए सतत डेवलपमेंट के लिए हमारा बुनियादी साइंस का जो रखा है, तो इनके ऊपर में हमारा ये प्रोग्राम और ये आज का जो डिस्कशन हम लोग जारी रखेंगे। तो बेसिकली बेसिक साइंस जो है, ये काफी साइंस का जो टेक्नोलॉजी का जो पार्ट हम लोगों को सब लोगों को दिखा जाता है। द स्लाइड इज विजिबल सर? विजिबल सर, विजिबल सर। ओके ओके ओके। सो तो बेसिक साइंस जो हमारा ये है, इसका हमारा जो पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। साइंस का जो मूलभूत साइंस का जो रिसर्च नहीं हो सकता है, तो आज हम लोग ये टेक्नोलॉजी का इंटरनेट हो और सैटेलाइट हो और एनी टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अभी सुपर कंप्यूटर के साथ हमारे जो आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आईओटी, ये सारा चीज हम लोगों को नहीं होता है। वी शुड थैंक टू आवर सर सीवी रमन, जो 1930 में वो फर्स्ट एंड लास्ट तरीका हिसाब से हमारा अभी तक विज्ञान में नोबेल प्राइज लेकर के जो रमन शोध, रमन इफेक्ट के लिए इनको प्राइज मिला हुआ था। इसी के कारण में वो कम्युनिकेशन इतने फास्ट हुआ है, हो रहा है एंड इस तरीके से हिसाब से आज हम लोग टेक्नोलॉजी का इतना ये सुझाव ले सकते हैं। तो ये जो है बेसिक साइंस, these are supposed to be the key
key tool for providing a a cultural dialogue with a scientific diplomacy, and it demonstrated lots of means and ways to contribute to more for the peaceful world. हमारा साइंस को आगे लेकर के समाज में प्रगति एंड शांति दोनों को बढ़ावा देने के लिए इसका सतत रिसर्च एंड वो डेवलपमेंट चल रहे हैं। सो 2022 को क्यों अच्छा टाइम बता दिया, क्योंकि कोरोना में हम लोग जस्ट अभी निकल रहे हैं एंड कोरोना के साथ हम लोगों का जो प्रॉब्लम हुआ, जितना जो हमारा डिफिकल्टी हुआ, इसके सारा कुछ चेंज करके इसी को एक कारण रख करके यूनेस्को एक साल का बेसिक साइंस के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उत्सर्गीकृत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका पहला जो रेशनल रहेगा, although it is generally recognized that science is useful for society, quite often basic science are not considered as they should very deserve, because it is in the discussion concerning to the societal, environmental and economic development में बेसिक साइंस का जो विजिबिलिटी जो समझ में नहीं रहता है, ये नहीं हो पाता है। तो इसके कारण में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स हम लोग सेलिब्रेट किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री सेलिब्रेट किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मैथमेटिक्स भी सेलिब्रेट कर लिया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी सेलिब्रेट किया, क्रिस्टोग्राफी किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट 2016 में किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियडिक टेबल भी 2020 में हम लोगों को सेलिब्रेट किया। इट इज नाउ द टाइम टू प्लान एन इंटरनेशनल ईयर फॉर बेसिक साइंस फॉर डेवलपमेंट। बट आज बेसिक साइंस इज वेरी मच क्यूरियोसिटी ड्रिवन, construct the pool of knowledge which is future generations will use for their development and sustainability। में जैसे हम लोग डिस्कशन किया था 2022 ही also काफी अलग-अलग तरीके से भी significant है। It is a good time to celebrate basic science for development, fit well with UNESCO and UN agenda like International Union of Pure and Applied Physics जो है IUPAP and many other union centenaries। They are also celebrating 100 years of Niels Bohr's Nobel Award, Stearns and Gerlach, Crampton scattering, 200 years of Brazil independence, Mid Sustainable Development Goals agenda। So ये सारा चीज को देखेंगे तो मिड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है 2015 से 2030 तक जो टाइम विंडो दिया गया है, हम लोग वी आर इन द मिड ऑफ दैट थिंग 2008 में और 2022 में है। तो इसी के को ध्यान में रख करके ये सारा चीज हम लोग बेसिक साइंस के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक साल को डेडिकेट किया गया। इनके अलग हमारा जो बेसिक साइंस के कारण में आज हमारा दिस वेब नेटवर्क इंटरनेट दैट वाज बोर्न एट CERN laboratory from the need of global collaboration for fundamental science। जहाँ पे बिग साइंस बिग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे यही बेसिक साइंस का जो कम्युनिकेशन होता है, तो इसी के हिसाब से आज हम लोग इस तरीके का चर्चा कर पाते हैं अलग-अलग शहर में, अलग-अलग इलाके में रुक करके। The success of Google, the second largest company in the world, comes from the brilliant mathematical idea that is also thanks to the basic science research and study। Artificial intelligence, which is relies on statistical methods and will have an influence of all aspects of society that also count its root to the basic science। the very now हम लोग जब डिस्कस किया सेलुलर फोन which is also come from the discovery of transistors, integrated circuits, Wi-Fi, astronomy, spin of development, these are all the fruits of basic science। GPS accuracy is in the spin of Einstein's general relativity, and the improvement in the accuracy of atomic clock is also based on the quantum technology। इतना भी नहीं है, डिस्कवरी ऑफ DNA has revolutionized medicine, which is also ये बुनियाद विज्ञान का एक एग्जाम्पल है। The genome project, which has opened the way to the gene therapies, the development of innovative instrumentations for basic science has many impact for health and development। PET, MRI, adaptive optics, lot of things which we are seeing in these high-tech hospitals for the very healthcare systems। The rapid uptakes of the generations and storage of renewable energy depends on advances in the physics, chemistry and material sciences।
So reduction in pollutions and green chemistry also rely on the basic advances in the chemistry. So with all these things, if you are seeing, so this would be coming to the giving this year that we should celebrate this 2022 as International Year of Basic Science. When this was announced in the late December and January, the UNESCO has asked for lots of collaborative partners, and from Gujarat, from the GUJCOST, we have submitted our proposal, and with all our activities and our action plans, the UNESCO has recognized GUJCOST as a partner of organizations of this International Year of Biodiversity, International Year of Basic Science for Sustainable Development. So here you can, if you are going through this international IOIB SSD website, you can see that this is here, GUJCOST is here, and in India there are 4 institutions are recognized and supporter and partner. One is our INSA, India National Science Academy, Delhi. One is Indian Academy of Sciences, IIC Bangalore. One is GUJCOST, and another is that ISOR, Kolkata. So 4 to 5 institutions, they have been recognized, and their presence has already been acknowledged at the UNESCO website on the IOIB SST. It is not like that only this recognized, but this is a program for entire world, entire all the member countries, all the member states, all the scientific institutions, all the academic institutions, how best we can understand the basic science, and इससे अच्छा कैसे हम लोग बेसिक साइंस का अलग अलग पॉइंट को लेकर के हम लोग नया नया ये कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं. दिस इज आवर GUJCOST building, and this is the certificate that UNESCO and IOIB SSD, that memorandum was signed by the president of IOIB SSD and the GUJCOST. So for these things, we have developed a very small illustrative exhibition, which is just saying the thing that how basic science are important and how best we can impact that type of sensitizations and engagement, education, excitement among our young students, the teacher community, the researchers, the scientists, the policymakers, the common citizens, everybody in our society to be a part of this program. So the International Year of Basic Science for Sustainable Development, it focuses the linkages between basic sciences and the sustainable development goals. Because sustainable development is one side, it touches with our livelihood, our lives and livelihood, and the basic science gives the technical part, how best we can manage the things with all challenges, all obstacles. This is a unique opportunity to convince all stakeholders that through the basic understanding of nature, actions taken will be more effective for the common good. We are also seeing that the drastic effects, the changes and the challenges of this climate change. So the more we learn about this basic science, its cause and effects, we can understand the root cause of climate change, and we can contribute to that thing. Basic science also is an important contribution, as also an important contribution to meet the crucial challenges such as access to the food, energy, health coverage, and communication technologies. They enable us to understand the impact of the currently nearly 8 billion people of the planet, and to get to limit and sometimes even to reduce it, depletion of the ozone layer, climate change, depletion of natural resources, extinctions of living species, and so many things that we are discussing. So, GUJCOST is a partner with all other institutions in the state, also with our state S&T council all across the country. Is always considered science education, outreach, and public engagement as important activities for our children and the common community members or the common citizens. The science education not only attracts, engages, and nurtures the future generation for science, but also helps in building scientific temperament in the society, which is the root cause for the development.
when we are discussing about sustainable development goal, and हम लोग जैसे बात करते हैं कि हम लोग 2015 से 2030 का बीच में 2022 में खड़ा है, तो वहाँ पे जो अलग अलग गोल है, नो हंगर फूड, नो हंगर शुड बी देयर, food for everybody, so providing drinking water, providing education, removing the gender equality, putting the all the justice, lot of things, the things that is there. So that are the main core element of the activities. We can take one by one of every goal, and we can design that how basic science, how the technology part, how our education understanding can make a difference. The IYB SSD will be a global event being organized by the different communities on the themes like strengthening the presence and visibility of women, basic sciences as a source of global dialogue and peace, science as a global public good, innovation and economic development, education and human development, meeting global challenges. Applications of technologies are easy to recognize. On the basis of, on the other hand, contributions of basic curiosity-based science are not well appreciated because it's very few, very deep understanding and learning is necessary when we are discussing about basic science, and it will take time, years to understand and to follow the nature's rules because it is comes from the nature. So they are the nonetheless at the basic basis of the major technological advances that stimulate innovations, creativity, as well as essential for training future professionals and for the developing capacity of populations who can take part in decisions making that affect our their future. While we are talking about this science education at an early age for the children, for our young students in the secondary, higher secondary schools, even the colleges, that gives an appetite for research and encourage people to pursue scientific career, which is essential for the development of the humanity. So this year-long activity should inspire and should engage and to excite the younger generation first, so that once they are completing their basic science, the basic education, so they can come into the research and development, and they can go for any creativity and innovations in their career. So the scientific methods and the curiosity can be brought to many other areas of a personal, professional, and social life, which contribute to the education of a responsible and autonomous citizens. In this context, हम लोग जब से सारा काउंसिल से सारा स्टेट कोऑर्डिनेटर के साथ हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसमें वी आर डिस्कसिंग ओनली थिंग दैट बेसिक साइंस और साइंटिफिक मेथड. तो ये मेथड के हिसाब से जो एक स्टेपिंग स्टोन हम लोग देते हैं, तो ये ईयर लॉन्ग कैपेसिटी ईयर में प्रोग्राम में वी कैन सी दैट हाउ बेस्ट वी कैन bring the scientific outreach, scientific attitude among these young students, so that in future we can get to the real scientist. Because the curiosity-driven research is the vital, is more important to ensure good health for all, overcome hunger, fight climate change, preserve our terrestrial and marine ecosystem, increase world peace, and fight for all inequalities. So once we have that type of understanding, that type of attitude, that type of temperament, which is curiosity driven, जहाँ पे हमको कि उत्सुकता रहेगा कि हमको इनका पीछे साइंस क्या है, एक बार वो चलेंगे, then we will be move ahead of this type of superstition, blind belief, or this type of misconception. Increased awareness also in basic science, which is supposed to be expected this year-long activities, will increase the opportunity for discoveries that can be improve human well-being within one context of sustainable development. तो जैसे जैसे हमारा साइंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग नया खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, नया इनोवेशन करेंगे, एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट हम लोग डेवलप करेंगे, तब हम लोग समाज के लिए अच्छा नया टूल टेक्निक वो दे सकते हैं,
हमारा इकोनॉमिक के लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं, हमारा वेलबींग हम लोग बढ़ा सकते हैं, हमारा फार्म जो प्रोड्यूस होता है, जो कृषि भित्तिक के राज्य होता है, देश होता है, इसमें हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग सबके मन में एक स्माइल भर सकते हैं, देखिए एक खुशी का एक माहौल भर सकते हैं। ये दिस इज ओनली possible through the basic science. Basic science is also prerequisite for sustainable development, as they have an important contribution in providing the essential means to meet crucial challenges such as universal access of food, energy, drinking water, health coverage and communication technologies, वो जो हम लोग बात कर लिया। तो इसी तरीके से देखेंगे तो it gives a good opportunity to explore, to design, to follow up lots of activities, starting from science awareness, superstition, removing the superstition, some Gram Sabha, some sort of programs like our Children's Science Congress. We have this STEM quiz, Gujarat STEM quiz we have conducted here. Large number of students are participating in this program. 1 year we have just completed. We are just announcing the second one very soon, and it can be also to spread to other states also. Then this will be the link to the different agenda of United Nations, as well as the 17 goals of this sustainable development journey of our. It is the roadmap for the global well-being for current and future generations. The sustainable development goals, which among other things point to be points to the better education opportunity, gender equality, clean water, affordable and clean energy, and a healthy environment that for which basic science can aid in identifying mechanism for correctly applying knowledge and transferring the technology. Throughout the year, researchers from all the disciplines, all the countries, without any boundary or barrier, will reach out to the general public and the decision makers, both public and private, to support the development of basic sciences, particularly in the areas where they are still underdeveloped. The year-long program of IYB SSD 2022 will encourage exchange between scientists and stakeholders, whether from the grassroots communities or political decisions makers and international leaders, associations, students, and local authorities in a many ways. So this program gives a lot of opportunity, lots of access, lots of what you can say that ways and means to participate, to involve, to engage all types of stakeholders in our society or community for the common cause. So the topics may be multi-language dialogue, अलग अलग हम लोगों का साइंस को प्रचार प्रसार करेंगे, एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, बेसिक साइंस एंड वुमेन, it figures we can sensitize empowering women role models. Basic science can be also taken to the innovation and economy, basic sciences with life sciences, basic sciences with the global challenges like your climate change, global warming, save the world from this plastic type of things, basic sciences as global public good, basic sciences and the sustainable development goal. This is the overall. So all these areas are the broader things in which I request all our science communicators, science educators, and science activities. They can work out, figure out whatever the best way they can be contribute to these things. So now our Government of India, Department of Science and Technology, or the department also, they can also provide some sort of financial support to carry out these types of activities for the community development, also for the achievement of sustainable development goals. So, lot of thing is going on international, global, regional, and national level, and we have to connect the things with the IOIB SSD and to our partner institutions like INSA, Indian National Science Academy, or Indian Academy of Sciences, GUJCOST, or this
Institute for Science Education Research, ISER Kolkata, and other institutions also for getting these things a continuous way of activities. So the sky has no limit. We have a year-long program. We have the lots of the canvas is open. Basic science is a very broader type of things. So we count on you for all that. With this word, I thanks the Indian Science Communication Congress for giving me a chance to discuss with this year-long programs of UNESCO and how best we can engage on this our children, our community, and whatever the communications we are having, like think globally, act locally, so that with that forum we can think that what are the global issues, global concerns, and global consequences are there, and how best we can participate and engage our local people, local stakeholders, local community members, so that they can understand the situation and they can bring the best for the society. So, with this word, I am concluding my presentation here. I am looking forward for any type of queries or questions that you have in your mind, so that we can resolve that one. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your great lecture. We get a good roadmap on this celebration also, and we hope under the GUJCOST, under your blessed chair, uh, we'll do our best, especially when we are also celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav in along with this thing. Thank you, sir, for being with us. Thank you. Thank you so much. We take this opportunity to invite our mentor, Sri Anil Kumar Dept Sahab, and Sri Anjan Banik Sahab, and all the active members of this Indian Science Forum to visit Gujarat, Gandhinagar, the Science City, and to be a part of our mission for this year-long activities. We're looking forward some sort of good program, national level program. In fact, last year we have hosted this National Children's Science Congress at Science City, Yes, sir. but till the last time it was due to Corona, we have to forcefully have to organize this online or partly hybrid. But this time our government and our organization is very keen, and we have submitted a proposal to NCSTC that GUJCOST will again host this National Children's Science Congress, which is going to celebrate it as the 30th edition of its journey at our Gujarat Science City. So Science City is also emerged with a new version, new set, new activities, new galleries. Very recently, last week, the Times Magazine also incorporated Gujarat Science City as a best higher learning destination among 22 such institutions across the world. So I would like to thank the government for giving us that type of opportunity to develop Gujarat Science City as a world-class science institution, a science appreciation center, and with this types of infrastructure, we can show that the science can be a great learning point, and a very entertaining experiences for one and all. So thank you so much. We are looking forward to receive you in our